डाइवोर्स दे दिया था, इसकी शादी कहाँ है डाइवोर्स का कागज? वो ये क्या पब्लिक नोटरी पे हो जाता है डाइवोर्स? आप तो वकील हैं भाई, जी बिल्कुल ये बहस तो वकील को तो नहीं शोभा देती। डाइवोर्स का प्रावधान है नोटरी पर, बिल्कुल सही। पढ़िएगा नोटरी एक्ट पढ़िएगा जरा। नहीं मेरा ये अच्छा, एक सेकंड, आप इन नोटरी साहब की भी नौकरी को खतरे में डाल रहे हैं। आई हैव टू रिकमेंड दैट इनका नोटरी का सर्टिफिकेट खत्म कर दिया जाए। नोटरी कब से डाइवोर्स कराने लगा, किस प्रावधान में? ये भी हम लिख देंगे इसमें कि नोटरी का जो है ये खत्म किया जाए सर्टिफिकेट। ये कौन है? श्रीकांत मिश्रा, अधिवक्ता, जिला मंडला। इनका नोटरी का सर्टिफिकेट जो है निरस्त किया जाए। द्वितीय विवाह करना प्रथम पत्नी के जीवित रहते हुए परमिसिबल है। पहले इतना मूल क्वेश्चन का आप उत्तर नहीं देना चाहते। हिंदू विवाह अधिनियम तो लागू नहीं होता ट्राइबल्स के ऊपर। यू हैव फेल्ड टू प्रूव दैट देयर वाज अ डाइवोर्स फ्रॉम अ कॉम्पिटेंट कोर्ट। दो पत्नी तो वैसे भी नहीं हो सकती, आप पहली पत्नी है, बात की पत्नी है, क्या कर सकते हैं? जिस आदमी की दो पत्नियां हैं, एक तो थूक मत लगाइए मिस्टर सिंह। पेज नंबर सर जी 71 जी 15 में क्या लिखा है? चलिए, माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिकाकर्ता श्रीमती पद्मसिंह भाई द्वारा आज याचिका क्रम WP नंबर 16 दिवंगत उत्तम सिंह मरावी द्वारा जीवित रहते कारण प्रस्तुत नामिनेशन परिवार पेंशन के विलेख का जांच परिचय करने पर श्री उत्तम सिंह मरावी आदिवासी की आय पूर्व 30/17 को सेवा निवृत्त होने पर उत्तराधिकारी नामांकन में पत्नी श्री रायन कुमारी का नाम कराया था तथा सेवा विलेख में पेंशन प्रकरण में पत्नी का संयुक्त छात्र श्री रायन कुमारी पत्नी के साथ फैसला कराया था। विवाह में दो पत्नी उन्होंने बताया था। उत्तम सिंह मरावी की दिनांक 7 दो पत्नी तो वैसे भी नहीं हो सकती, आप पहली पत्नी है, बात की पत्नी है। सर मैं ये अरे आपसे सिर्फ मैं सवाल मैं सेकंड वाइफ हूँ, लेकिन सेकंड वाइफ का क्या, सेकंड वाइफ सर्विस में कैसे हो जाएगी? ये किसी को भी पेंशन नहीं मिलेगी, आपका रेट्रोस्पेक्टिव डिसमिसल हो जाएगा और वायलेशन ऑफ द कंडक्ट रूल्स। Irrespective of your caste, creed, religion, no government servant is entitled to maintain two wives. जो 47 साल के दो पत्नियां हैं, क्या कर सकते हैं? जिस आदमी की दो पत्नियां हैं, उनको 1/2 कर दिया। किसने कर दिया? पेंशन रूल में है, 47(7)(1) में है क्या है कि अगर दो पत्नियां हैं, किसमें है ये? पेंशन रूल पेंशन रूल पढ़िएगा जरा। पेंशन रूल कब का है ये? एक तो थूक मत लगाइए मिस्टर सिंह। 47 लीजिएगा पेंशन रूल, देखिए क्या लिखा होता है। How can pension rule recognize two wives when conduct rule says that it is misconduct to have two wives? इसमें 47(7) का फर्स्ट है ना, 47 का एक सेकंड रुकिएगा, 47 पढ़ने दीजिए। 47 ब्रैकेट में की ब्रैकेट फर्स्ट। हाँ पढ़िए। जहाँ एक से अधिक अंग्रेजी में नहीं लाए क्या किताब? हिंदी है मेरी बात, ये पढ़िएगा। जहाँ एक से अधिक विधवाओं को परिवार पेंशन भुगतान योग्य है तो विधवाओं को बराबर वही से परिवार पेंशन भुगतान किया जाएगा। 47A पढ़ रहे हैं ना? 47 का फर्स्ट पार्ट। इस सेकंड में लिखा किसी विधवा, एक मिनट रुकिएगा प्लीज। फोर्टी सेवन का तो है ही नहीं, पेंशन रूल्स पढ़ रहे हैं ना? अवेलेबल बड़ा 19 नियम 47 का आपने का बोला, का तो है ही, का तो ए होता है, कैपिटल ए। हाँ इसमें लिखा हुआ है। का पढ़ रहे हैं आप? दिखा देंगे सर। बहुत आगे चला गया बेटा, 7 क्लास जी आगे है। ये स्पष्टीकरण में है सर, क्लैरिफिकेशन में है। निकाल के दीजिए इसमें से। क्या? हाँ पढ़िएगा क्या है? जहाँ एक से अधिक विधवाओं को परिवार पेंशन भुगतान योग्य तो विधवाओं को बराबर पैसे। तो विडो का नॉमिनेशन तो होना चाहिए ना?
नहीं, अब ये वही तो देखिए इसमें क्या हुआ था कि इन्हें इन्हें जो फर्स्ट वाइफ थी 2000 में विड्रॉ कर दिया था, डाइवोर्स दे दिया था, इसकी शादी कहाँ है डाइवोर्स का कागज? वो हाँ लगा है, उसी पे तो हाई कोर्ट ने आदेश किया था ना कि कंसीडर कर इसी कर 44 साल पर डिसाइड करें। हाँ। मैं कह देखा पेज नंबर 41 पेज 41 रजिस्टर P4। हाँ पढ़िएगा। मैं श्रीमती रेन कुमारी पिता स्वर्गीय गोपाल सिंह मराठी। ये क्या पब्लिक नोटरी पे हो जाता है डाइवोर्स? आप तो वकील हैं भाई, जी बिल्कुल ये बहस तो वकील को तो नहीं शोभा देती। डाइवोर्स का प्रावधान है नोटरी पर, बिल्कुल सही। पढ़िएगा नोटरी एक्ट में, पढ़िएगा जरा। नहीं मेरा एक सेकंड, आप इन नोटरी साहब की भी नौकरी को खतरे में डाल रहे हैं। आई हैव टू रिकमेंड दैट इनका नोटरी का सर्टिफिकेट खत्म कर दिया जाए। नोटरी कब से डाइवोर्स कराने लगा, किस प्रावधान में? ये भी हम लिख देंगे इसमें कि नोटरी का जो है ये खत्म किया जाए सर्टिफिकेट। सर एक सेकंड में आगे। अरे एक सेकंड नहीं, आप पहले हमारी बात का उत्तर दीजिए, हम तो आपको पूरा 1.5 बजे तक सुनेंगे। नहीं सर, बताइए नोटरी में डाइवोर्स का क्या प्रावधान है जिसको आप यहाँ रिलाय कर रहे हैं? आई हैव टू डायरेक्ट द अथॉरिटीज। ये कौन है? श्रीकांत मिश्रा, अधिवक्ता जिला मंडला, इनका नोटरी का सर्टिफिकेट जो है निरस्त किया जाए। लाइसेंस टू एक्ट एज अ नोटरी रिक्वायर्स टू बी टर्मिनेटेड। They are only given affidavit, my lord, not They have given affidavit. I understand that this affidavit has no sanctity in the eyes of law. That is what I am asking him to prove. That on the basis of, और ये जिस साहब ने नोटराइज किया है उनका भी तो लिखना पड़ेगा, इनकी भी तो जांच होगी। बता देना। फैक्ट तो समझ गए भाई। नहीं मैं इन्हें 2000 में इन्हें शादी करी। हाँ। उसके बाद विभाग में अपने सेकंड वाइफ के साथ फॉर्म सबमिट किया और P5 लगाया। P5 है। जी। अच्छा, इसमें फतसिया भाई पिटिशनर रही से फॉर्म सबमिट किया और बच्चों का क्या नाम, लिखा आपने इसमें? इसमें ये क्या नाम है, मध्य प्रदेश पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का फॉर्म सबमिट किया। हाँ, इसमें फर्स्ट वाइफ जिसने अलग हो गई, चली गई, शादी नहीं करी, तो इन्हें बतासिया बराबी जो है गोड़ जाती है, हाँ, हाँ। इनका गोड़ जाती मिलकर ये प्रोसीजर नहीं है हिंदू एक्ट में कि नाम इसी में लिखा हुआ हिंदू एक्ट की बात नहीं कर रहा, हम कंडक्ट रूल्स की बात कर रहे हैं। है। आई एम कॉन्शियस ऑफ दिस फैक्ट कि हिंदू एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू द ट्राइबल्स। मेरे इन कंडक्ट रूप में हमको सस्पेंड किया, लेकिन मैंने एप्लीकेशन मूव करी, आगे से मेरी RTI कॉपी नहीं दे रही। ठीक है, इसमें फॉर्म सबमिट किया मराबी के लिए। मराबी के बाद इन्फॉर्मेशन P6 में देखें, फॉर्म 23/9/14 को आप सबमिट करें, रैन कुमारी बतासिया दो नाम क्यों लिख रहे हैं? जी जी 23/9/14 को जी। इन्हें एप्लीकेंट P7 में पूरा ये प्रेजेंट पिटिशनर का अपना और 3 बच्चों को, जो फर्स्ट वाइफ के 2 बच्चे हैं 25 का एक्सप्लेनेशन दिया। P846 को 8/10/14 को नाजर की यह कि मैं मेरी पत्नी से विगत 15 पुरुष पर हम दोनों और सब बात समझ गए भाई। पहले आप ये तो बताइए, कंडक्ट रूल में चाहे आदिवासी हो चाहे किसी अन्य समाज के हो, उनको द्वितीय विवाह करना प्रथम पत्नी के जीवित रहते हुए परमिसिबल है। पहले इतना मूल क्वेश्चन का आप उत्तर नहीं देना चाहते, आपने उठाकर इसमें हिंदू विवाह अधिनियम 55 की धारा 5 का मिल गया। हिंदू विवाह अधिनियम तो लागू नहीं होता ट्राइबल्स के ऊपर। अधिनियम धारा के अनुसार मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी जात, तसूरी जात को इधर सरकार द्वारा चुनाव के माध्यम से उक्त अधिनियम लागू नहीं किया गया। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, कंडक्ट रूल लागू नहीं किया गया। पढ़िएगा 1965 का कंडक्ट रूल निकालिए। हिंदू 5 का कहते हैं हिंदू विवाह के लिए एक शर्त दी गई कि विवाह के दोनों समय आपसे क्या निवेदन कर रहे हैं आप, या तो यू आर स्पेशलाइजिंग इन वेस्टिंग टाइम। I admit this fact that Hindu Marriage Act is not applicable to tribals. I am myself saying this thing. I am asking you to read from the conduct rules that conduct rules permit keeping 2 wives simultaneously, because you have failed to prove that there was a divorce from a competent court. सर वही P9 वही है। उसके बाद हमको इन्हें सुकाज नोटिस दे 4 से आरोप पत्र दिया। चलिए P9 देख लें। मैंने P9 देखा, आरोप पत्र दिया। आरोप पत्र कंडक्ट रूल पे दिया, पेज नंबर 51 जी। विवाहिता पत्नी रैन कुमारी के जीवित रहते श्रीमती दूसरी पत्नी रखना जो कंडक्ट रूल के तहत फिर क्या हुआ इसके बाद? इसके बाद ये हमको इसको इक्वल कर दिया गया 2018 को। कंडोन क्या कर दिया गया? अब ये बोले इक्वटल कर दिया गया। कहाँ है वो? मुझे वही तो मैं वही बता रहा हूँ। मैंने फिर उसके बाद RTI की एप्लीकेशन मूव करी और ये आदेश हाई कोर्ट का। RTI की एप्लीकेशन P40 देख लें, पेज नंबर 17 पेज नंबर 70 70 70 ये जी।
मैंने सर्विस बुक कॉल करी, विषयागत प्रलोभन करे माध्यम से उत्तम सिंह मराठी सेवन के सर्विस बुक सेवा पर प्रमाणित चाहिए गई है। अतः सूचना के अधिकार 2 की धारा के अनुसार स्वर्गीय मराठी श्री पहले आप अपना स्टेटस तो बताइए। उन्होंने सही तो कहा, धारा 11 में कैसे दे देंगे आपको सर्विस बुक? यू आर ए स्ट्रेंजर। This petition is filed assailing the order dated 13/2/2023 passed by the Superintendent of Police Mandla rejecting claim of the present petitioner to get the pension on account of death of Uttam Singh Marathi on 7/9/2021. Full stop. Rejection order makes a mention of the fact that Uttam Singh Maravi had first marriage with Srimati Ren Kumari, and in his service book, name of Srimati Ren Kumari is mentioned. Full stop. Even in the pension case, joint photographs of late Shri Uttam Singh Maravi and Srimati Ren Kumari have been affixed. Expert. Petitioner's contention is that late Shri Uttam Singh had divorced his first wife Srimati Renu Kumari. Ren Kumari and Renu Kumari. Ren Kumari. And Ren Kumari had sworn an affidavit before the notary public on 7/10/2014 to the effect that she has no objection in her husband she had taken divorce in 1998-1999 as per tribal customs and traditions, which has legal sanctity. Full stop. She further deposed that they were staying separately for last 15 years and she has no claim in the property of on the body and property of Shri Uttam Singh, and both are living separately. Next paragraph. It is submitted that petitioner had contacted marriage with Shri Uttam Singh Maravi. किस तारीख को शादी की है आपने? 15/5/2000 On 15/5/2000, and this fact is mentioned in the form which was submitted by Uttam Singh Maravi in the form of Exhibit P5. Full stop. Thereafter, a notice was issued by the Superintendent of Police Mandla on 23/9/2014 seeking his explanations, but subsequently a departmental inquiry was initiated. Full stop. It is submitted that that inquiry was not concluded, and by implication, Uttam Singh was exonerated in that inquiry. Thus, petitioner is entitled to get family pension on account of death of Shri Uttam Singh Maravi. Next paragraph. Shri Singh has placed reliance on the provisions contained in 47 within bracket 7, another bracket small a, another bracket Roman 1 of the Madhya Pradesh Civil Services Pension Rules 1976, wherein it is provided that where the family pension is payable to more widows than one, comma, the family pension shall be paid to the widows in equal shares.
Full stop. Reading this provision, it is submitted that even if Ren Kumari is deemed to be first surviving wife, then family pension is to be paid in equal proportion between Srimati Ren Kumari and the present petitioner. Next paragraph. Shri Singh further submits that provisions of Hindu law are not applicable to the tribal community and therefore no inference can be drawn on the reading of or interpretation of Hindu Marriage Act. Full stop. Next paragraph. Shri Manas Mani Verma submits that petitioner's conduct is against the Madhya Pradesh Civil Services Conduct Rules and he is not entitled to maintain two wives. Full stop. It is further submitted that an affidavit sworn in before the notary is not a proof of divorce of the first wife. Full stop. Next paragraph. After hearing learned counsel for the parties and going through the record, it is evident that Rule 22 of Madhya Pradesh Civil Services within bracket conduct bracket close rules, 1965 deals with bigamous marriages. Full stop. Next paragraph. Sub Rule 1 of Rule 22 of the rules of 1965 provides that within inverted commas, no government servant who has a wife living shall contract another marriage without first obtaining the permission of the government, comma, notwithstanding that such subsequent marriage is permissible under the personal law for the time being applicable to him. Full stop. Next paragraph. Thus, it is evident from plain reading of Rule 22 of Madhya Pradesh Civil Services within bracket conduct bracket close rules 1965 that irrespective of the personal laws, no government servant is entitled to contract second marriage without first obtaining the permission of the government. Full stop. No such permission is produced by the petitioner on record. Full stop. Thus, petitioner's second wife has no legal sanctity in as much as there is no documentary evidence on record to show that deceased Uttam Singh Maravi had divorced his first wife, Ren Kumari. Full stop. In fact, in the affidavit, name is mentioned as Renu Kumari, whereas in the official record, name is mentioned as Ren Kumari. Full stop. Thus, even the genuineness of the affidavit is also under suspect. Full stop. Is also under suspicion. Full stop. Taking these facts into consideration and the fact that conduct rules do not permit second marriage, comma, and Rule 47 within bracket 7, another bracket small a, another bracket small Roman 1 deals with the situations where the law permitted two marriages prior to promulgation of the Conduct Rules 1965 and does not deal with the situations after coming into force of the Conduct Rules of 1965. Full stop. Therefore, when the whole situation is examined in the light of the Conduct Rules of 1965, then petitioner's contention that he is second wife and is entitled to family pension is not made out because contracting second marriage itself is a misconduct and is a misconduct. Full stop. Thus, the impugned order, when examined in the light of the conduct rules, then it cannot be said to be illegal or arbitrary. Full stop. It is a speaking order
giving reasons for denial of pension to the family pension to the petitioner who claims to be second wife, full stop. Thus, petition being devoid of merit deserves to be dismissed and is hereby dismissed.